Hello, hi everyone. Today we are going to discuss a very important topic of geography. And most of the students, especially beginners, they struggle over here. Because every year in UPSC, in UPPCS, in Bihar Public Service Commission, questions are asked both in prelims as well as in the mains examination. But the language of many of the books that students go through, say for example NCERT or GC Leong or Savindra Singh or DS Lal or Estrella or Critchfield, any of the book you will take, the language is such a confusing that we are unable to understand that what exactly they are trying to communicate. And this is the reason why most of the candidates struggle over there. And the topic is from climatology, as I hope you have guessed. And climatology, the topic we are going to take, and that is wind. Now, first of all, I will take from the very scratch. Fine. Very scratch means from the very basic, so that you will be able to create the entire picture in your mind. When I say topic is wind, so do not jump onto the main theme, that wind, what type of wind systems, etc. No, just flow with the wind the way I am taking to you people. Just question yourself that what is wind? What is wind? Just question it. So when you say that what is wind, then obviously the answer comes here that any moving wind is called moving air, is called wind. Then here question is that why any air will move? Why any air will move? Then air will move because we know the Newton's law of inertia. If something has to move, then in that case there must be some force responsible for it. All right. So there, for the movement of the wind, we need some sort of pressure gradient. Pressure gradient. Pressure means what? Here we are talking about atmospheric pressure. Now, what is the meaning of atmospheric pressure? Then atmospheric pressure means force exerted by atmosphere per unit area. Per unit area. What does it mean? You see, we are here on the surface. All right, say this is our surface, and here this is atmosphere. This is atmosphere. Now on this atmosphere, this is horizon, and here in the middle, suppose if we are here on the surface, just suppose that we are making some small columns. Column number 1, 2 and 3. So here you can say that this column is filled with air, and suppose if the conditions are very ideal, then in all the columns amount of air filled should be the same. Suppose that this is column A, this is column B, and this is column C. In that case, column A, B and C, everywhere pressure exerted by
force exerted by per unit area, fine, by the air should be the same. If we take that and consider that the surface is a plane surface, then on this surface the average condition is from here to here, from here to here, and from here to here the pressure is 1013 millibar, 1013 millibar, 1013 millibar. सारे के सारे एरिया पे ये प्रेशर हमारा आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, और ये प्रेशर ये बता रहा है कि ये 1013 मिली बार है। अब ये मिली बार क्या है? तो ये मिली बार होता है यूनिट मेजर करने का प्रेशर को, तो ये मिली बार का प्रेशर है। तो इसी को कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया। अब अगर कंडीशंस अगर आइडियल हो तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा 1013 मिली बार, ठीक, ये हो गया। अब सवाल है कि ग्रेडियंट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट literally means that a slope. What is the meaning of slope? Like we have seen in the hilly areas, if the water has to flow, so there should be high altitude and there should be mean sea level. Then only in that case water will flow from here to here like this, and this is called slope. It is called gradient also, slope gradient also. Thus if air has to blow, so there should be some gradient, means somewhere there should be high and somewhere there should be low. Wind will also blow from high pressure to low pressure. This is called the pressure gradient. कि आप कभी आप एक एयर, सिंपल एयर रहेगी जिसको कि हम एयर कहते हैं, ये एयर इज ए सिंपल मिक्सचर ऑफ gases. If it is simple mixture of gases, it means that we are considering that air is stable. But the moment air starts moving from one place to other, it is considered as wind. It might be local wind, it might be periodic wind, it might be permanent wind, trade wind, westerly wind, etc. etc. ठीक ना? अब ये जो हमने लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि ये एयर विंड कैसे बनेगी? तो दो बातें आई। पहली बात ये आई कि प्रेशर का ग्रेडियंट होना चाहिए, और ये प्रेशर क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया। और अब देखिए कि हाई प्रेशर या प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा कैसे, ये देखिए। अब ये मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और हर जगह मिली बार बिल्कुल से 1013 मिली बार है। Now, suppose in a given area there is a high temperature. अब यहाँ पे टेम्परेचर को हमने अचानक से हाई कर दिया, ठीक, टेम्परेचर को हाई कर दिया। अब आप पूछिए कि टेम्परेचर कैसे हाई कर दिया आपने? अब ये हो सकता है बिकॉज ऑफ इंसोलेशन, जो हम पहले देख चुके हैं, है ना, इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। Solar radiation. This solar radiation is translated into terrestrial radiation, and that way heating of atmosphere is done. मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा हो गई और टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर टेम्परेचर इसका बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बिल्कुल लोएस्ट सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा? इस सरफेस पे यहाँ पे कंडक्शन होगा, है ना, कंडक्शन होगा। व्हाट इज कंडक्शन? तो कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन two bodies are in direct contact to each other.
व्हेन टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। जैसे ये हाथ मेरा और दूसरा हाथ मेरा, अगर मैं इन दोनों को यहाँ रखूँ तो मुझे ये पता समझ में नहीं आएगा कि मेरा ये हाथ गर्म है या ठंडा है। लेकिन अगर मैं टच कर दूँ तो जहाँ पर जो हाथ मेरा गर्म होगा, जिस हाथ को मैंने बर्फ पे रखा होगा या जिस हाथ को मैंने आग पर सेका होगा, इमीडिएटली वहाँ से हीट ट्रांसफ़र दूसरे हाथ पे होने लग जाएगा। एंड जैसे आप हैंड शेक पे देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपने आयरन की रॉड ली है एंड यू आर पुटिंग दैट वन एंड ऑफ द रॉड इनटू द फायर, देन ऑटोमेटिकली अदर एंड ऑफ द फायर आल्सो स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस होगा। इस कंडक्शन के प्रोसेस से नाउ अब यहाँ ये जो एयर है ये हीटअप होगी और इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस एयर विल स्टार्ट राइजिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब तक ये इसी कॉलम में है तब तक तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द मोमेंट दैट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, आप खुद समझ सकते हैं कि नाउ इनटू दिस पार्ट देयर इज एडिशन ऑफ एयर, एडिशन ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी एयर थी ही। इस एडिशन ऑफ एयर से अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, बहुत ही सिंपली अगर बोले तो इस रीजन में नाउ एंड इस रीजन में एंड इस रीजन में यहाँ पे डिफरेंस इन द प्रेशर आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे इस एडिशन की वजह से यहाँ आ गया हाई प्रेशर, इस एडिशन की वजह से यहाँ आ गया हाई प्रेशर, और इस एयर के आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा लो प्रेशर, एंड ये बन गया हमारा क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। This is called pressure gradient, and because of this air will start moving from here to here, and this is called wind. Fine, and this pressure is called thermally induced pressure gradient. This is called thermally induced pressure gradient. I hope it is clear to everyone. Fine. Now here what we learned, that the pressure, we learned that the what is wind. Wind is moving air. Why does air move? It moves because of pressure gradient. What is pressure? That is force exerted by atmosphere per unit area. What is gradient? So that is the difference in the air atmospheric pressure. I hope it is clear. Now after learning this, we learned that winds are of three types. Number one is there, and that is called permanent winds. These are also called planetary winds. Number two is there, that is called periodic winds, and number three is, that is called local winds. Fine. Permanent winds, planetary winds, periodic winds and local winds. When we talk about the permanent winds or the planetary winds, as the name suggests, that planetary means found all across the region, found all across the globe or planet. And when we say permanent,
तो परमानेंट मीन्स 24 into 7, that is 365 days. Fine. 365 days ये लगातार चलती रहती है एक ही डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर. फाइन, विदाउट एनी चेंज. दैट इज वाई परमानेंट. इन same direction. And when we talk about periodic winds, so these winds reverse their direction after certain time. Fine, we can say that these winds take U-turn. These winds take simply U-turn. U-turn means turn on 180 degree. Means if any wind was blowing this way, it starts blowing this way. This is the feature of periodic wind. This is the feature of periodic wind. And when we talk about the local winds, then local winds are those one which are temporal and spatial. Temporal means for a time being. Spatial means specific to certain area or region. Specific to certain area or region. That is called local wind. Now we will talk about, I hope that you understood. There we have learned simply we have learned that when we talk about permanent, it means all across the globe. And same direction, same place, almost, because of shifting of wind belts. This almost is because of shifting of. अब ये न्यू कमर्स छोड़ देंगे इसको. वी विल डिस्कस लेटर ऑन शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स. एंड थर्ड वन इज सेम डायरेक्शन, सेम प्लेस एंड थ्रू आउट द ईयर. Throughout the year. तो ये फीचर्स हैं, these four features are there which define permanent winds. Now the question is कि what types of permanent winds are there? So there are three. Number A is there, and that is called trade wind. Number B is there, and that is called westerly wind. And number C is there, that is called polar wind. That is called polar wind. Now let us see this is
imaginary globe here it is 0 degree, 30-35 degree, 60-65 degree and 90 degree. And this is 90 degree. Up on this globe, how do these winds are blowing? Permanent winds. Then obviously we see that trade winds blow from 30-35 degree to 30-35 degree to equator. Then this is called trade wind. Here westerly winds, these winds blow from 30-35 degree to 60-65 degree, like this. All right, and thereafter polar wind is there, and that polar winds blow from 90 degree to 60-65 degree. All right, now just let me do customary nomenclature. Then this is called polar wind, this is called westerly wind, this is called trade wind, and all these three are there in northern hemisphere. These are also trade wind, these are westerly wind, and here these are polar wind, and these belong to southern hemisphere. All right, so this is called trade wind. Now one by one we need to understand that trade winds originating from where, going where, what kind of effect it has on the local weather conditions. Are these responsible for the formation or bringing modification into the weather conditions or formation of climatic conditions of a given area? Have you ever thought that these trade winds are responsible for the formation of equatorial type of climate? These are responsible for causing heavy rainfall on daily basis on the equator, that is between 10 degree north to 10 degrees south. If we know about the equatorial climate, then how this climate has developed? The reason is these trade winds. ITCZ, intertropical convergence zone. How do the winds converge and how do winds cause rainfall? That is the matter of some other topic we will be discussing later on. लेकिन यहाँ ये बात आपने समझनी जरूरी है. कभी आपने सोचा कि इस ट्रेड विंड को ट्रेड विंड ही क्यों कहते हैं? अब कई लोग जो समझते हैं इस बात को कि हमने एक बात तो बात कह ली कि these are called the permanent winds and the permanent winds are blowing into the same direction throughout the year. Means these are following the same track. Got it? But at the same time, these trade winds were used by our sailors during the ancient and medieval phases. Sailors means like if you have seen a movie Pirates of Caribbean.
तो देयर यू हैव सीन द लार्ज शिप्स आर देयर एंड द ह्यूज सेल इज देयर। तो उस सेल पे व्हेन द लार्ज शिप इज देयर एंड ऑन द लार्ज शिप देयर इज ए ह्यूज सेल, तो इस पे विंड का प्रेशर आएगा एंड दैट विंड प्रेशर विल टेक द शिप अहेड। तो जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन में हम विंड के डायरेक्शन को यूज करते थे एंड वी वर यूजिंग एंड दैट इज व्हाई इट वाज यूज्ड इन अ ट्रेड। तो इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। Westerly wind, here you can see that in any map, here in the north it is the north and here in the south it is south. So this is west and this is east obviously. So wind, westerly wind in northern hemisphere is also blowing from the west southwest to northeast and here it is blowing from the northwest to southeast. That is why it is called westerly wind. अब जरा आप मुझे सोच के बताइए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। दैट इफ विंड इज ब्लोइंग, से ट्रेड विंड इज देयर, ट्रेड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट in southern hemisphere. If I ask you that the which part of the continent will receive rainfall due to the trade wind, what answer you will give? If I ask about the westerly, the same question, which part of the continent will receive rainfall, eastern or the western, what will you answer? If the polar wind is there, similarly. So very simple shortcut is there. Fine, because such questions are also asked in the prelims examination and frequently asked in prelims examination. So there you see trade wind, this one and this one is also called easterly wind. All right, and this one is already westerly. So easterly wind always rains along with eastern coast of continent, and the westerly wind will rain along with western coast of continent, and polar wind along with eastern coast. Because you can see direction of this one and this one is the same, black and blue is same, blue and black is same, so that will also cause along with eastern coast of the continent. याद रहेगी बात, इजी है। अब आपने दिमाग में रखना है वर्ल्ड का मैप। अब अगर वर्ल्ड के मैप को हम इसी पर ले लें और अगर हम वहाँ पे शो करें कि किस पार्ट ऑफ, जैसे अब मान लीजिए अफ्रीका है या एशिया है या इंडिया की बात करते हैं, या हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो वाला पार्ट भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका का एक मैप ले लूँ, ये है साउथ अमेरिका and this is equator, fine, and this is 23.5 degree south. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन होगा वो ट्रेड विंड कैसे आएगी, तो नदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड ऐसे आएगी और सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड ऐसे आएगी। तो आप देखिए कि कौन सा पार्ट यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दिस वुड बी द एरिया विच विल रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। एंड अगर मैं आपसे बोलूं तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज दैट दिस इज द रीजन ऑफ अमेजॉन। हालांकि इसमें कन्वर्जेंस का इफेक्ट भी है जो मैंने बताया ITCZ का, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो लेटर ऑन। लेकिन हेयर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विंड्स ने यहाँ पे काम किया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So this is about the permanent winds. I hope enough I have given for the day.
and in the upcoming videos we'll be talking about the other types of the winds and their importance, and thereafter finally I will summarize all the wind systems, local, permanent, and how these are operating and what sort of impact these winds exert over the given climatic belt or the local conditions. I hope you enjoyed our video. Thank you very much.